Hello friends, welcome back, and this video is the part 2 video of IBO 05. And in part 1, I shared you with some very important questions, and again in this video, like, you cannot skip out any one of the question because all these questions have been analyzed for the last 10 years examination paper. So it is very important that you should revise all these questions before going to the exams. And one thing more, like, if you want the PDF of all this study material, you can message me through my Telegram channel. So let's begin the video without wasting any time, and let's see few important questions. Okay, the first question is, what are the documents required in export logistics? These are the following documents required for this. First, air bill. So without an air bill, you cannot import or export goods and services in international market. Then you must sign one certificate of origin. Certificate of origin is जहाँ पे goods बना हुआ है, like in which country the goods are manufactured. So accordingly, the manufacturer will issue this certificate. Then bill of lading. This is one of the most important document in international trade. And then we have to obtain combined transport documents. So there are many transport documents which are to be collected for export. Then bill of exchange. Then insurance policy. Now this is also very important, as you know that without insurance you cannot make an export or import. Then you must also issue this packing list specifying all the details of the goods to be exported, and then inspection certificate. Now inspection is generally done by the manufacturer himself and the custom authorities. So this certificate must be there. So I have briefly explained all these points, right? Let's move on to the next question. Write a short note on 7R. Now what is this 7R in international logistics? It's very simple. ये short note में आ सकता है, बहुत important है. Like first one, right product, then we have right customer, right time, right place, right condition of the goods when it is delivered, and right quantity, and lastly right cost. That means reasonable cost should be charged, right? Let's move on to the next very important question. What is the difference between bill of lading and charter party? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इसको पढ़े बगैर आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं जाना है. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ lading एंड चार्टर पार्टी, विच इज द फर्स्ट डिफरेंस. नाउ it is a document acknowledging the receipts of goods on board. On board means on the ships, that you have received the goods. And charter party, it is the hiring of the entire or a part of ship जिसको आप import and export में यूज़ करने वाले हैं. जस्ट जैसे हम लोग कोई कार को रेंटल में हायर करते हैं, like that. Then bill of lading is a transferable document, whereas charter party is not a transferable document. And loans can be raised on the basis of bill of lading, but in case of charter party, the importer or exporter cannot raise any loans, right? So let's move on to the next question. What is bill of lading? Just now I told you in the difference that it is a legal document issued by the carrier or transportation company to a shipper specifying the type, quantity and destination of goods to be exported. And it serves as a document received when the carrier delivers the goods. जो carrier मतलब ship को जब cargo को deliver करता है तो ये certificate उसको issue करनी पड़ती है to the shipper. And the document must accompany the shipped products, no matter in what form of transportation that it has used. Then it must be duly signed by the representative of the carrier, shipper and receiver. It is a document of the title of goods described in the bill of lading. It is basically a receipt for the shipped products, right? बहुत important line है. Then it also represents the agreed terms and conditions for the transportation of goods, and shippers and receivers, consignees, name, address,
सो एवरीथिंग इज देयर. जैसे कि हम लोग कोई कोरियर करते हैं तो कोरियर वाला इट इश्यूज अ रिसीट कि यस आई हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड विल बी डिलीवर्ड टू दिस एड्रेस. सो लाइक दैट इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ दैट रिसीट. तो यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स देने पड़ते हैं बिल ऑफ लेडिंग में, लाइक डेट ऑफ शिपमेंट, द नंबर ऑफ शिपिंग यूनिट्स, द नंबर ऑफ कार्टन्स, पैलेट्स, किट्स, ड्रम्स. तो ऐसे गुड्स के बारे में ऑल द डिटेल्स, सो दे आर स्पेसिफाइड इन दिस. एंड these आर द three basic functions of bill of lading. First, it is an evidence of the contract of carriage कि yes, the contract has been undertaken and goods have been received. Then a receipt of goods, and thirdly document of the title. तो like this ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बिल ऑफ लेडिंग के. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. व्हाट इज स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक प्लानिंग. ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम्स में ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता है एंड इसको भी आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है. बेसिकली a logistic strategic plan is a framework that helps in planning, implementing and controlling the supply chain management, and it will help you to coordinate the plans, goals and policies to ensure cost reduction and improved efficiency. So basically यहाँ पे in strategic planning what we do planning, we do implementing of the plans and controlling the supply of goods and services to ensure that the goods have been dispatched and reach the customers smoothly. So there are the three major aspects of strategic logistic planning includes these three main goals, that is long term goals. Long term goals include customer satisfaction, your company's competitive advantage over the competitors. Then the second one is means for achieving the long term goals, that is delivering the value. That means good quality of goods and services should be delivered along with the after sales services. And thirdly, process. Now the process, how you will achieve your plans, long term plans. So these are the three main aspects of strategic logistic planning. And here again there are few elements of strategic logistic plan, basically to achieve the long term plans, the objectives and how each cost and service will relate to the product, then description of each strategy, right? Then breakdown of each logistic and operational plan including timing, cost and all that, and forecasts of the requirements of workforce, capital, money, all that. तो ये एक तरीके की प्लानिंग है. तो प्लानिंग में जितने भी लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड द प्राइसेस, एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन दैट. तो ये दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट. राइट, देखते हैं इसका मीनिंग. मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है दैट मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट इज ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मोर देन वन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. राइट, तो यहाँ यहीं से समझ में आ जाती है कि व्हाट इज मल्टी मोडल. एंड इट कैन बी कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज रोड, रेल, सी और एयर. एंड बहुत सिंपल चीज़ है. एंड इसके थोड़े से एडवांटेजेस देख लेते हैं मल्टी मॉडल के. इट रिड्यूसेस द कंजेशन, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट, इट रिड्यूसेस द कस्टम costs and increasing smuggling control. Then it reduces the prices of imported goods. It improves the competitiveness of the company. It allows scheduling of activities and better control and timely exportation and import of goods. And it also reduces transport cost and also it reduces the element of risk. तो क्योंकि मल्टी मॉडल में एक से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हम लोग यूज़ करते हैं, तो import or export में we have to use more than one transport. That is obvious. So it is not possible for single transport से नहीं होगा.
Then there are few disadvantages also, like it will, basically यहाँ पे disadvantage में, at different places the goods have to be inspected, like रोड से, रेल से, बहुत सारे सिक्योरिटीज़ के जगह से गुड्स को गुजरना पड़ता है, तो गुड्स को इंस्पेक्ट किया जाता है, एंड अगेन इट ऑल्सो इंक्रीजेस द कॉस्ट, एंड द थर्ड फैक्टर इज टाइम, टाइम बहुत ले जाएगा। ओके, मल्टी मोडालिज्म एंड इंटर मोडालिज्म, इसका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी जरूर से पढ़ के जाइए एग्जाम्स के लिए। एंड मल्टी मॉडल के बारे में जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, एंड इन इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन देयर इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच इंडिविजुअल लेग ऑफ द जर्नी। This means that there is more than one responsible entity for the successful delivery of the cargo, right? So इसके दोनों के मेन डिफरेंसेस देख लेते हैं। these are all multimodal transport के advantages, and advantages of intermodal transport, इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं। That shippers can use the carriers to take advantage of lower rates for each transport leg. Shippers gain flexibility and specialized handling of the cargoes. Then shippers can reduce their carbon footprint by choosing the environmentally friendly carriers, and there is an increased security of the product. That means, intermodal में basically, the responsibility is given to different प्रोफेशनल पीपल, जो जैसे फॉर एग्जांपल के रोड ट्रांसपोर्टेशन है, तो जो कोरियर सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनको दे दिया जाता है गुड्स। देन अगेन दे रोड ट्रांसपोर्टेशन के बाद में अगेन लाइक सपोज आपको उसको रेल में ट्रांसपोर्ट करना है, तो अगेन देयर आर रेल कोरियर सर्विसेज, तो दीज आर लाइक प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट एजेंट्स, सो दे आर ऑल इंक्लूडेड इन इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन, राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज ऑन वेयर हाउसिंग एंड हाउ वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। आई थिंक वेयर हाउसिंग के बारे में आप लोगों ने क्लास 12 में, 11 में, बीकॉम लेवल में जरूर से पढ़ा हुआ है, एंड इसका एक बार वापस रिकैपिचुलेट करते हैं दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग, प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग गुड्स फ्रॉम डैमेज, एंड इट एड्स टाइम यूटिलिटी टू द गुड्स। And let's see the main roles, advantages, importance of warehousing. Firstly, they have a centralized storage. That means goods can be, stored in one place systematically. Then better processing of the orders, because you can select which goods to be, sold. तो वहाँ से आप choose कर सकते हैं. Then there is improved production quality, because it is not necessary कि all the production is sold out immediately, so you can concentrate more on production efficiency. Then improved purchase decisions, this is also one important part or role of warehousing. Then leverage seasonal market changes, कभी कभी market, seasonally कुछ products के seasonally market होते हैं, जैसे jackets, sweaters, तो ये on a particular season they are demanded, so you can store them systematically, and it also helps to reduce the risk of spoilage, so like that. Let's see the different types of warehouses. Basically there are public warehouses, ये सबसे important warehouses है set up by the government or state government, and private warehouses are also there which are owned by single individuals. Then there are cooperative warehouses which are owned by a group of business community. So like this. So basically these are the three different types of warehouses. Okay. आगे चलते हैं। Next question, what is economic order quantity? ये MCO 07 में भी है, that means MCOM के सेकेंड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So basically ये इन्वेंट्री कंट्रोल का एक टेक्निक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एंड बहुत ही सिंपल है, दिस इज लाइक वेरी इजी वन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द आइडियल क्वांटिटी ए कंपनी शुड परचेज to minimize its
इन्वेंट्री कॉस्ट लाइक स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट, दैट मिनिमम कंपनी को कितना स्टॉक रखना चाहिए. सो दैट इज द क्वेश्चन विच इज आंसर्ड बाय EOQ, right? And the overall goal of EOQ is to decrease spending on storage. उतना ही स्टॉक रखेंगे जितना जरूरत है. अननेसेसरी का स्टॉक रखेंगे बिकॉज दैट विल अगेन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज. सो लाइक दिस. इसके ऊपर एक्चुअली दिस थिंग न्यूमेरिकल्स भी है, लेकिन न्यूमेरिकल्स अभी आपको मिलेंगे नहीं. So these are the different factors that affect economic order quantity. So basically reorder point है यहाँ पे, then purchase order lead time, then purchasing cost per unit, stock outs, quality costs, demand of the product, then relevant ordering cost and relevant carrying cost. So these are the main factors that are considered before deciding the economic order quantity for an organization. Okay, let's see the benefits of EOQ. There is improved order fulfillment because you can maintain the maximum required amount of stock with you. So that will help you in fulfilling the orders in time. Less wastage, that is understood. Then lower storage cost, and the company can offer quantity discount. So these are few benefits of EOQ. The next one is ABC analysis of inventory control. Again, जैसे EOQ है वैसा ही ABC analysis है of inventory control. And basically according to this technique, the stocks are divided into three types, category A, B, C. कैटेगरी ए में बेसिकली जो ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैटेगरी ए में रखते हैं. कैटेगरी बी में ऑल मॉडरेट वैल्यू प्रोडक्ट, एंड कैटेगरी सी में ऑल वेरी चीप आइटम्स. तो अकॉर्डिंगली उनको केयर किया जाता है बिकॉज कैटेगरी ए नीड मोर केयर बिकॉज दे आर कॉस्टली लाइक मशीन्स. तो इनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है एंड द कंपनी हैज़ टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी एंड टाइम on maintaining this category A stocks. Category B basically moderate value के होते हैं, ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है इन पे. एंड कैटेगरी C आर द लिस्ट वैल्यू, दे डू नॉट रिक्वायर मच कंट्रोल. जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफिस में स्टेशनरी, पेपर, पिन्स एंड ऑल दैट, सो दे आर ऑल कैटेगरी C आइटम्स, राइट. लाइक दैट द नेक्स्ट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक इज जस्ट इन टाइम, जिसको हम लोग मोस्ट पॉपुलरली नोन एज JIT टेक्निक. एंड दिस टेक्निक जैसे कि नाम में है इसके, जस्ट इन टाइम, दैट मीन्स एज एंड व्हेन यू रिक्वायर गुड्स you will order for that, right? So goods are ordered only when they are needed. So this is the main basic role of JIT. The main object is to control stock of goods, to reduce inventory wastages and concentrate on production rather than handling stocks. And basically this type of technique is used by all जो कंप्यूटर वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, तो वो सब कंपनीज यूज करती हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. एनालाइज द रोल ऑफ मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया इन हैंडलिंग इंटरनेशनल कार्गो एंड स्टेट द कंस्ट्रेंट्स फेस्ड बाय देम. तो बेसिकली ये है एयरपोर्ट्स के ऊपर, बिकॉज शिप का हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारी दिक्कत है इंडिया में. ये प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट को लेके. फर्स्ट, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, देन हाई कॉस्ट ऑफ एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, ये फ्यूल का बहुत कॉस्ट है इंडिया में, दैट्स वाई एयर कार्गो एयर से भेजना कॉस्टली होता है. देन हाई सर्विस टैक्सेस एंड अदर चार्जेस एंड सरचार्जेस. देन स्टोरेज एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी, ये भी नहीं है एयरपोर्ट्स में इतनी अच्छी, इंडियन एयरपोर्ट्स में. देन हाई फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ये दिस इज वन अगेन प्रॉब्लम. देन कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन एयरलाइंस, बहुत सारी फॉरेन एयरलाइंस हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, एंड इंडियन कंपनीज दे फेल टू कम्पीट विद दैट. देयर इज लॉट ऑफ कंजेशन एट एयरपोर्ट्स, एंड पैसेंजर्स के लिए एंड कार्गो के लिए अलग अलग एयरपोर्ट्स की फैसिलिटी भी नहीं है, सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. एंड देयर इज लैक ऑफ क्वालिफाइड पायलट्स and technical manpower to handle the cargos. So this is again a major problem. So these are all the problems, and
देखते हैं रोल ऑफ एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेशनल इकोनॉमी. Basically, airport is the nucleus of economic activity. That means it plays a very important role in the growth and development of a country. So it is very important for a country to develop the infrastructure for airports, right? So airports, they need to be integrated with other modes of transportation like railways and roadways, so that better transportation systems can be established, and that will help in the smooth flow of cargo. And the basic objectives, there are certain policies which are framed by India to develop airport. What are those? First, to provide a boost to international trade and tourism. Then it also has devised a lot of policies on airport capacity. Then it also has improved a lot of airport facilities. Then it also ensures the safety and security of the aircraft operations, and to provide a market orientation to the present structure. So like that बहुत सारी policies इंडिया ने बनाई हैं to develop airports, and these are the basic steps taken. सबसे पहले तो ये international hub बनाए गए हैं in some states where only import and export activities are carried on. And all these all these big cities like Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Amritsar, Guwahati, so they are all added up. And second facility or policy is regional hubs. According to the regions, according to the states, different hubs बनाए गए हैं to carry out the international transportation and export of goods and services. Then there are a lot of policies introduced for modernization and upgradation of airport infrastructure. So this is also one of the very important policy which is introduced by the Indian government. Then the government has also provided helicopter services for easy flow of goods and services. Then there are also air traffic services which are provided at the airport. Then it also provides all these cargo facilities separately. Okay. So these are all major uh, policies which are provided by the government. So friends, that's all in this video, and I hope these questions can strike in your exams and you can write better on this. And but writing skill is also very important. Try to explain the points. Okay, so let's stop this video right now, and we'll see you in the next video with another important topic. Best of luck.